here to offer testimony to a sovereign our escorting our Pradeep Dunk, OS, Principal Reverend Father Anil Kumar Kuzur, the management of St. Luke's School, August Gathering, honorable students and dear parents. I, Kanchan Kevat, and my co-anchor C. Joseph Isagar, on behalf of St. Luke's School family, welcome you to the auspicious occasion of 76th Republic Day. It is an honor to stand before the permission has been granted. in the first, heading the Boy Civilian Troop led by Parade Commander Master Swastik Raj Panigrahi. Next to them, the MCL Civilian Girls Troop led by Commander Ms. Shreya Sri Lakra and Flag Bearer Ms. Lakshita Bhandekar. The Nehru House, which is with the name Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first president, who was the first Prime Minister of India, representing the yellow color that can evoke the feelings of energy, enthusiasm and optimism. Now we have the Kalam House with the name APJ Abdul Kalam, who served as the scientist and statesman, representing the blue color, which is associated with stability and confidence. Representing by green color, which is associated with health, wellness, and fortune. Commander, तीनों दिन में डायना चलेगा डायनामोड the Dynamode command has already given, and the commander of each house and each parade troop and the flag bearers are taking their position to begin the parade. And absolutely a lovely sight to see. Each beat counts. The mark of how is the Josh in every soul. In our first troop, our boys MCL troop, leading by Commander Swastik Raj Panigrahi and flag bearer Vishal Patnaik.
Girls Troop Commander Shri Lakra and Flag Bearer Lakshika Pandita. Next, it's alright. Upcoming, the Nehru House Boys Troop Commander Out Nehru House, Kansavan, Kalam House, Patnai, and Flag Bearer Chandni Rai. Following them, the Kalam House Boys Troop Commander Flag Bearer Kaushik Shoya. The Green House, the Gandhi House, Girls Troop Commander Ayush Panda and Flag Bearer Aisha Khatri. Behind them, the Gandhi House and Flag Bearer Kushki House. Flag Bearer Shri Pani. Following them, the boys. तिरंगा हमारा खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, हम भारत। उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का। अकाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का। अकाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का। अकाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे ना। We invite our honorable chief guest to address us and share his insight on the significance of Republic Day. Sir. Respected Reverend Anil Kujurji, Principal of this school, all the teachers, staffs चुनी गई थी and dear इसलिए इस दिन को हम 76th रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ था, इसलिए उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे या स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाते हैं। पर स्वाधीन भारत को शासन करने के लिए एक संविधान या एक कॉन्स्टिट्यूशन का आवश्यक भारत को था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं। भारत का संविधान हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। इस
संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मिलते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल होता है और ऐसे ही हमारे संविधान का भी एक प्रियम्बल है और वो ऐसा लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। कहाँ कहाँ में जस्टिस चाहिए? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल। हमारे संविधान का पहला आर्टिकल क्या है? व्हाट इज द आर्टिकल नंबर 1? आर्टिकल नंबर 1 ऐसा लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस पर हम जान सकते हैं कि हमारा देश हमें एकता का भावना प्रदान करता है और कलेक्टिव बिल्डिंग को कलेक्टिव बिल्डिंग को एक दिन का सपना नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, बट कलेक्टिव बिल्डिंग के प्रोसेस और जब हम कलेक्टिव बिल्डिंग करेंगे is always better than external. To the respected chief guests, principals, teachers, parents, and my friends, I, Larisha Mohanty, wish a happy 76th Republic Day to all. 26th January is the day when our Constitution came into force, making India a 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। यह संविधान हमें यह अधिकार देता है और गणतंत्र दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान है जिन्होंने अपनी जान देके हमें ये स्वतंत्रता दिलाई। गणतंत्र दिवस भारत के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं है बल्कि अपने देश के प्रगति और अखंडता के लिए कार्य करना है। आज भारत विज्ञान, शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन हमारा असली विकास तभी प्राप्त करेगा। तो आइए इस दिन हम ये संकल्प लें कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे और अपने कार्यों को पूरा करेंगे। दे सलामी इस तिरंगा को जिसमें तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगा को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। Parents and all my dear friends, my name is Divyanshi Mahapatra and I am from class 5 section 8. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating our 76th Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We celebrate this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950 and India became a secular and democratic nation with written constitution. Our constitution is the largest written constitution in the world, written by Dr. B.R. Ambedkar. Our constitution is the supreme law of India. We should always respect our constitution. On Republic Day, the President of India unfurls our national flag at Kartavya Path, New Delhi. On this day, we sing our national anthem with great respect and pride. And various cultural programs are organized in different parts of our country. In this day, we remember our brave freedom fighters, martyrs, and soldiers. Republic Day makes us realize about the importance of democracy. Republic Day teaches us to live in peace, love, and unity. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Once again, a very happy Republic Day to all of you. to deliver her speech on this special occasion, guided by our respected teacher, Ratnamani Sharangi ma'am. A huge round of applause for her, please. କଥାରେ ଅଛି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଶାନ୍ତିର ବାରତା ଦେଇ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ ଆପେ ଜାଣକି ହୋଇ। ଗୌରବନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହି 66ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର
हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। मु अर्पिता मिश्र एठार उपस्थित प्रत्येक लोक यह जानी साधारणतंत्र दिवस कौन, किंतु मैं आज ये सभा पालन कर कारण कौन यह विषय में कहवाक 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारीख में 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारीख में भारत वर्ष स्वाधीन है। प्रत्येक भारतवासी स्वाधीनतार स्वाद चाहिए, किंतु सेतेबेले देशरे देशवासी को बांधि रखा कौन प्रकार आईन बा कानून प्रस्तुत हो नथिला। सेतिपई भारतर तत्कालीन राष्ट्रपति तथा संविधान सभार अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण कार्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को देखते। अम्बेडकर नेतृत्व में गठित कमिटी द्वारा 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिन में भारत वर्ष संविधान को प्रस्तुत करा। 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख में यही भारत वर्ष संविधान को संविधान सभा द्वारा गृहीत करागला एवं 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख में यह सारा देश में सारा भारत वर्ष में कार्यकारी करागला। प्रत्येक भारतवासी निजको निज हाथ शासन कले एवं श्रृंखलार एक डोरे बांधि होगले। यह गणतंत्र दिवस बा साधारणतंत्र दिवस पालन कर मुख्य कारण। कवि भाषा पदटी स्वाधीन देशर संतान आमे, स्वाधीन देशर संतान आमे यही आम जन्मभूमि, स्वाधीन देशर संतान आमे यही आम जन्मभूमि। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाई यही भारत वर्ष संविधान विश्वर सबुठार बड़ लिखित संविधान जो 448 अनुच्छेद 12 अनुसूची एवं 25 भाग रही अछि। यही भारत वर्ष संविधान आमको आम अधिकार लड़ार हक देछि। एणु यह आमर प्रथम कर्तव्य एवं परम कर्तव्य जे आम यही भारत वर्ष संविधान रक्षा करबा एवं सम्मान करबा। तेणु एति कही मोर वक्तव्य विराम देउछि। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।
celebrate on this auspicious occasion. Honorable today's chief guest, Sri Pradeep Jang, OAS, Registrar, ESSUT Burla Sambalpur, esteemed teachers, respected parents and my loving students. Today, as the citizens of our nation, we are proud to celebrate the Republic Day of our nation. We are happy, we are cheerful, we are delighted that we are the citizens of India and we are proud to celebrate 76th Republic Day of our nation. Dear friends, as we celebrate the Republic Day, we are not to only remember our forefathers, we are not only to be proud to be the citizens of our nation, but this day, the Republic Day celebration and the day gives us Herculean call to be the responsible citizens of our country. It also reminds us our duties and responsibilities. It gives us Herculean call to build our nation, to contribute our might in nation building. It reminds us to be junior Abdul Kalam. It reminds us to be junior Ambedkar. It reminds us to be junior Nehru. It reminds us to be great. Dear friends, only when we are disciplined, only when we have the patriotic spirit, only when we have the allegiance to our motherland, we can become great. We'll be able to fly in the sky and we'll be able to go down in the sea. So dear students, you are the future of our country. You are the future of our country. You are the identity of our country. Our forefathers have brought and work hard and given us the freedom. And we must live that freedom. And freedom doesn't mean that we are allowed to do anything and everything, but freedom with responsibility. So, dear students, as you have performed, as you have taken part in the March past, as you have given slogans, I invite you to make promise that you will become great. You will keep up the identity of our nation. You will become the junior Kalam, you will become the junior Nehru, you will become the junior Ambedkar, and you will become the responsible citizen of our country. And let us promise that we shall make our motherland, we shall make our country number one in the world. It is not that America can become number one, but we can become number one. Only we need to be disciplined, we need to work hard, we need to respect one another, and let us join hands to keep up the unity and fraternity, diversity of our nation, and truly our land will become number one in the world and it will become the developed country. So dear friends, dear teachers, parents and students, let us be bold, let us be proud, let us join hands with one heart and mind. If we work, surely our nation will become a developed country and we shall become great. We will be able to fly in the sky, we shall be able to go down in the sea. All the best, God bless you. Thank you, respected father, for your beautiful words. You really inspire us with your every beat of words. धरती सुनहरी, अंबर है नीला, हर मौसम है रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाएं करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. Now we have reached to the concluding phase of today's occasion. So now, all present here, Honorable Principal, Reverend Father Anil Kumar Gujul, esteemed guests, Sri Pradeep Jang Sir, OAS, Registered VSSUT Burla, Sambalpur District,
Reverend Father Vinod, Reverend Father Biti, invited to be raised. Dear parents, respected teachers, my dear colleagues, and adorable students. On behalf of St. Luke's School, Bulla, I deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks on this great and auspicious occasion. So first of all, we convey our sincere gratitude to our honorable chief guest, Sri Pradeep Danshaw, OAS, for finding time to come over to our institution in spite of his hectic engagement. On behalf of the entire institution, I thank you, sir, for your concern over the school and for your gracious presence. I would like to take this opportunity to convey our sincere thanks to our principal, Reverend Father Anil Kumar Kujul, for his able and timely guidance. We are immensely thankful to him for his overall supervision, constant guidance, and encouragement in making the program a grand success. I must thank to the member of managing committee and all the parents for their cooperation and goodwill. I'd like to convey my thanks to all the students who have participated with great excitement and enthusiasm. We have been जय जवान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। स्कूल संबलपुर प्रथम पुरस्कार जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रेणी का प्रथम पुरस्कार जाता है।